गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंसेक्ट एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी आपका जाना पहचाना शब्द है। एम्ब्रियोलॉजी हम हर जगह यूजी में भी पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? एम्ब्रियो प्लस लॉगस, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, आइदर it takes place within the body or outside the body. इंसेक्ट में हम डेवलपमेंट की जो बात करेंगे वो प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहां पर हालांकि एम्ब्रियोलॉजी वर्टिब्रेट्स के समान ही है। यहाँ इंसेक्ट एग है, योक है, मेम्ब्रेन्स हैं, सब चीजें फर्टिलाइजेशन होता है, सब चीजें हैं। उसी तरह का यहाँ हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस that usually begins once the egg has been fertilized। वहां से एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होती है। एग का फॉर्मेशन, oogenesis और फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में उसमें डेवलपमेंट शुरू होगा। इट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस। Definitely the cleavage occurs that is similar to the mitosis, and their subsequent growth, movement and differentiation into all the tissues and organs of living insect. The field of insect embryology has recently yielded stunning insight into the developmental process of humans and other vertebrate organisms. ठीक उसी तरह से there is a remarkable similarity in gene responsible for the organization या organizing the fundamental body plan in vertebrates and invertebrates. For example, eyelashes, a gene needed for the development of an insect compound eyes, is also necessary for the development of a mouse vertebrate eye. ये इंसेक्ट एग है, और यहां हम इंसेक्ट एग की अगर बात करते हैं, इसमें सबसे बाहर ये शेल, जिसे हम कवच कहते हैं, जैसे हम बर्ड्स के अंदर भी बात करते हैं क्लिडोइक एग है, तो यहाँ पर भी ये बाहर शेल देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक छेद देखने को मिलता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रो और यहां से फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। स्पर्म्स जो है इसमें से एंटर करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है पेरिफेरल सरफेस पे उपस्थित होता है, और अंदर जो भरा हुआ है वो योक भरा हुआ है। तो यहाँ जो अंडा होगा वो कैसा अंडा होगा? नंबर एक बात, शैल उपस्थित है, ऊपर मेम्ब्रेन्स उपस्थित हैं। दूसरी बात, योक की बहुत अधिक मात्रा है, तो क्लिडोइक एग होगा। दूसरी बात, हम यहाँ कहते हैं सेंट्रल योक है, इसलिए सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग होगा। इसमें सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है, केवल पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म उपस्थित है, तो यहाँ सुपरफिशियल क्लीवेज उपस्थित होगी। तो ऐसी स्थिति में जब सुपरफिशियल क्लीवेज उपस्थित होगी तो ब्लास्टोडर्म कहाँ बनेगा? ये केवल परिधि परिधि पर सेल्स बनेंगे। हम यहाँ आगे चलते हैं। Although much of insect embryology is still a mystery,
There has been remarkable progress in knowledge over the past few years thanks to new methods of molecular biology and genetic engineering which help in the study of the development. An insect egg, अभी जो हम बात कर रहे थे, is much too large and full of yolk to simply divide in half like a human egg during its initial stage of development. Imagine how much time and energy would take just to build new cell membranes. Birds have this same problem. Think of the yolk in a chicken's egg. Birds solve the problem by having the embryo develop within a tiny spot of cytoplasm. हम वहां पर भी देखते हैं, वहां पर डिस्कोब्लास्ट, ये जो है ब्लास्टोडिस्क जो हमें देखने को मिलती है, केवल एक पार्ट में छोटा सा जो है साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, बाकी पूरे में वहां पर भी योग बढ़ा हुआ होता है। उसमें और इसमें जो योग बन रहा है उसमें अंतर इतना है, वहां पर एक पार्ट में एक एंड पे है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर पूरे योग के चारों तरफ फैला हुआ है साइटोप्लाज्म, अंतर इतना सा है। तो वहां पर जो है ब्लास्टोडिस्क उपस्थित होती है ऑन द सरफेस ऑफ द योग, और यहाँ पे सराउंड किए हुए रहते हैं। इंसेक्ट्स सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द क्लोनिंग ऑफ द जाइगोट न्यूक्लियस माइटोसिस विदाउट द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर माइटोसिस होता है, 10-12-13 डिवीजन हो जाते हैं और लगभग 5 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं। This process of nuclear division is known as the superficial cleavage. हमने पहले ही कहा साइटोप्लाज्म सुपर जो है वो केवल सरफेस पे उपस्थित है, तो वहां पर क्लीवेज जो होगी या जिसे हम माइटोसिस बोल रहे हैं, दैट इज क्लीवेज, वो कहां पर होगी? केवल सरफेस पर होगी, तो इसे हम सुपरफिशियल क्लीवेज बोल देते हैं। इन ट्रू the cleavage entire cell divides as they form the cleavage nuclei, often called energets, migrate through the yolk towards the perimeter of the egg. They settle in the band of periplasm where they engineer the construction of membranes to form individual cells. The end result of cleavage is the blastoderm. वहां डिस्कोब्लास्टुला बनेगा, यहाँ ब्लास्टोडर्म बनेगी और यॉक की चारों तरफ बनेगी। A one cell thick layer of cells surrounding the yolk. मैं अभी बताया कि yolk के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी, और वो सुपरफिशियल क्लीवेज से हुआ। The first cleavage nuclei to reach the vicinity of the oosome are reversed for the future reproductive purposes. They do not travel to the periplasm and do not form any part of the blastoderm. Instead, they stop dividing and form germ cells that remains segregated throughout the much of the embryogenesis. These cells will eventually migrate into the developing gonads, ovaries and testes to become primary oocytes and spermatocytes. Only when the adult insect finally reaches sexual maturity will these cells begins divide by meiosis to form gametes for the next generation. Gametes are egg and sperm. Germ cells never grow or divide during embryogenesis. वो यहाँ grow नहीं करते. So DNA for the next generation is conserved, संरक्षित रख लिया जाता है from which the very beginning of the development, शुरुआत में. This strategy has a clear selective advantage. It minimizes the risk that an error in replication, a genetic defect, will accidentally be passed on to the next generation.
Blastoderm cell on one side of the egg begins to enlarge and multiply. This region, known as the germ band ventral plate, is where the embryo's body will develop. The rest of the cells in the blastoderm become part of a membrane, the serosa, that form the yolk sac. Cells from the serosa grow around the germ band, enclosing the embryo in the amniotic membrane. At this stage of development, when the embryo is not much more than a single layer of cells, a group of control gene called the homeotic selector gene becomes active. These genes encode the proteins that contain a special active site, the homeobox, for binding with DNA. They interact with a specific location in the genome where they function as switches for activating or inhibiting the expression of the other genes. Basically, each selector gene controls the expression of certain other genes within a restricted domain of cells based on their location in the germ band. अब हम होम्योटिक जीन्स की बात करते हैं कि उनका रोल क्या है. By regulating activity within the suite of genes that produce hormones like organizer chemicals, cell surface receptors and structural elements, the selector gene guide the development of the individual cell and channel them into different career paths. This process is called differentiation. It means the genes or the homeotic genes are control the differentiation by secreting the chemicals or the organizers or the hormones. So this process is called differentiation, continue until the fundamental body plan is mapped out. ये हम वर्टिब्रेट्स में भी देखते हैं कि हर एक पार्ट से एक डेफिनेट ऑर्गन का निर्माण होता है. उसी तरह से यहाँ पर इंसेक्ट के अंदर भी ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू होगा. फर्स्ट, इनटू जनरल रीजन along an anterior posterior axis, पहले elongate होगा anterior posterior axis के अंदर, then into individual segments, and finally into specialized structures or appendages will be formed or developed. अब यहाँ पे हम बताएंगे उससे क्या बनेंगे. As the germ band enlarges, it begins to lengthen and fold into a sausage shape with one layer of cells on the outside, the ectoderm, and another layer of cells on the inside, known as the mesoderm. 3 germinal layers will be formed. An important developmental milestone called the dorsal closure occurs when the lateral edge of the germ band meet and fuse along the dorsal midline of the embryo's body. Ectoderm cells grow and differentiate to form the epidermis. The brain and nervous system. एक्टोडर्म से क्या क्या डेवलपमेंट होगा, ये डेवलपमेंटल फेट है. जर्म लेयर्स से इससे क्या बनेगा. यहाँ पर एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा हम जानते हैं. एपिडर्मिस बनती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बनती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम बनता है, सेंस ऑर्गन्स बन जाते हैं, फोरगट बनती है, हाइंडगट बनती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनती है, एक्सटर्नल जेनिटल. ये सब चीजें क्यों बन रही हैं. आपने देखा होगा फोरगट मिडगट, जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे तो वहां बोल रहे थे हम कि वहां काइटिनस क्यूटिकल है देखने को मिलती है.
So all the parts which are present here, which are developed by the ectoderm, have cuticle. सभी में क्यूटिकल पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ दूसरा पार्ट जैसे मेजोडर्म कहते हैं, उससे क्या बनेगा? हार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फैट बॉडीज, गोनेट्स, क्योंकि इनमें कहीं पर भी क्या नहीं होते? क्यूटिकल नहीं है। तो ये जनरल ऑर्गन्स जो बन रहे हैं वो मेजोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म से जो बनता है वो केवल मिडगट बनती है। हम वैसे भी कहते हैं एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है, लेकिन यहाँ फोरगट और हाइंडगट जो है वो एक्टोडर्म से बन रही है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? मिडगट, और वो किससे बनेगी? एंडोडर्म से। तो हेयर इज द लेयर्स ectoderm. The another layer is the mesoderm. An important development milestone called the dorsal closure occurs when the lateral edge of germ band meet and fuse along the dorsal midline of the embryo's body. Ectoderm cell grow and differentiate to form the epidermis, the brain, and nervous system. And most of the insect respiratory tracheal system is also developed from the ectoderm. In addition, the ectoderm invaginates, fold inwards, at the front and rear of the embryo body to create front and rear portion of the digestive system, that is known as the foregut and the hindgut. Mesodermal cells, mesoderm cells differentiate to form other internal structures such as the muscle, glands, heart, blood vessels, blood circulatory system, fat body, and reproductive organs. The midgut develop from the third germ layer, that is the endoderm, as given in the table, that arise near the fore and the hindgut, the hindgut invaginations, and eventually fuse with them to complete the alimentary canal. Foregut, midgut, or hindgut, all the three layers, three parts of alimentary canal are formed, but foregut and hindgut is formed by the ectoderm, while the midgut is formed from the endoderm. अब हम इसी की बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे जब वो हैच आउट हो जाएगा उसके बाद। During its early development, the embryo's body is rather worm-like in appearance. Individual segment first become visible near the anterior end, that is known as the protocephalon, where the ectodermal tissue differentiate into the brain and compound eye. Bud-like swelling of develop in front of the mouth opening. They will eventually grow to form the labrum, front lip of mouth part, and antennae. Segment behind the mouth also develop bud-like swelling. Each of the first three post-oral segments from paired appendages that becomes mandible, that becomes mouth parts, mandible, maxilla, and labium. The next three post-oral segments develop into the thorax. They form appendages that becomes walking legs. Segments of the abdomen also develop limb buds. These soon shrink and disappear. Perhaps they are vestigial remnant of abdominal appendages found in most primitive arthropods like the millipedes and centipedes. Another pair of vestigial buds appears on the head between the antennae and mouth parts. This pair is called intercalaries. May be remnant of a second pair of antennae found in members of class Crustacea.
In general, the rate of embryonic development depends on temperature, insect and poikilotherms, and on the species-specific characteristics of development. The embryogenesis ends when the yolk's contents have been consumed. The immature insect is fully formed and ready to hatch from the egg. All the developments till the described structures are takes place within the egg. इसके बाद में हैचिंग होगी और उसे हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काउंट करें। तो यहां पर भी कि भाई किस बात पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। डेवलपमेंट ऑन टेम्परेचर, इंसेक्ट पोइकिलोथर्मिक and on species specific characteristics of development. Embryogenesis ends when the yolk contents have been consumed. The immature insect is fully formed and ready to hatch from the egg. During the hatching process, often called eclosion, the young insect may chew its way through the egg's chorion, or it may swell in size by imbibing air until the eggshell cracks. Along the predetermined line of weakness. Once the hatchling emerges, it is called the first instar, or that is nymph or larva. As it grows, it will continue to develop and mature. These post-embryonic changes are known as morphogenesis. तो अब इतना जो बातें हमने कही कि यहाँ तक जो हैच आउट होगा, यहाँ तक का डेवलपमेंट होगा, वो प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, which takes place within the egg. और after hatch out, the developments or the morphogenesis occurs, that is known as the post embryonic stages or post embryonic development, which will be described later on. Thank you very much.